हेलो जी। हेलो जी, आज हम जो वीडियो लिए हैं भाई इंडियाज $7,000। आज क्या बात है, $7,000 हमारे पता नहीं कितने बनते हैं, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा ही बन जाते हैं। ये है लग्जरी ट्रेन राइड। छोटी सी वीडियो है, बड़ी ज़बरदस्ती ट्रेन राइड होने वाली है, देखते हैं। So, despite it being luxury, I hope you'll join me on a very fun adventure. So I'm gonna check this out for a little bit and then we'll head over to the train. I didn't mention this was a Paradakal temple. Alright, welcome to the Badami Caves. Apparently there's water monkeys and there's caves. So it's not exactly Petra, but the color of the rock is very similar. It's like a mini Petra, I think. Alright, this is cave number 4. And it's the most impressive one. So if you're gonna come check out these caves, just go to this top one. It's the one to do. And as always, everybody loves taking pictures with us. This is our wonderful golden chariot, and it is a luxury train here in India. If you're going to travel with the rails, luxury is always nice. Nice to have a nice change. So today I'm going to show you exactly what it is to experience a luxury train here in India for 24 hours. First thing we have is we have our butler who gives us hand sanitizer. Thank you, sir. Yeah, get those nice germs off, huh? Oh, thank you. And even a little towel for your hands. Check it out. Oh yeah, that's some good liquid. All right, we're gonna go inside and check it out. I'll just keep the cabin here and show you guys what it looks like. Now, the problem with me is that I'm a very tall man. Sometimes I hit my head on top of these things. This is so nice. There is even furniture in the middle of the carts, which is so funny. Alright, so I'm a very tall man, so when it comes to trains, I kind of gotta put my head to the side because I don't fit. Here we have a bar area, so if you want to have some drinks, this is where it's at. I believe this also doubles as a disco place, so you can dance as well. And here we have the dining hall. This is where all the food gets served. And right in the middle is where they cook the food. We got the chef over here, we got people eating. And there we have an office for the people in charge. And what I think is the most hilarious of all the parts of the train is there's a gym. It's not bad for a train. It's you have 3 machines, which is pretty crazy because, you know, who thinks about doing exercise on a train, right? That's so funny. And if you want a spa or a massage, you can get that on board as well. Check it out. You just gotta sign up and they'll give you a massage. Here we have some 5-star dining. So we got salad, first course, dessert. It's awesome. It's fantastic. Alright, it is now time for one of my favorite experiences on jumping on a train here in India. You ready? Yeah, so one of the more interesting experiences is actually being able to stick your entire body out of the train. It's something that we Westerners are not very used to, and it's very unique. I love this experience. It's so cool. Everybody stares at you too. It's great.
I believe now we're rolling into a train station. So definitely one of my top things to do in India is stick yourself out the train. So if you're ever here, give it a try. So at stations, you actually stop for a little bit and then you basically continue on. So you have a very quick moment to walk around, buy something, and very quickly get back on the train. Today's challenge is jump on a moving train in India. One of the craziest things about this train, or any train in general, is that you always have to like move around and it really looks like you're just walking drunk. Yeah, you gotta try not to hit the walls and stuff as you're moving on the train. Oh, even on the train, there's a DJ and there's a party today. So definitely the best part of a train community is you actually get a chance to meet like a lot of interesting people. So the fellow bloggers, people that were on this train before us, it's really interesting to see all the different stories and backgrounds. 5 स्टार सिस्टम, सारी डाइनिंग 5 स्टार, होटल 5 स्टार, इतना प्यारा। अच्छा ये तो गोल्डन चैरियट है, इसके ऊपर हमने बड़ा व्लॉग से देखे हुए हैं और रिएक्शन भी दिया हुआ है। VIP वाला, ये तो थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है ना, अभी तो और रिसेंटली भी हमने देखी है ना, और ज़्यादा प्यारी ये हुई भी है। और पैसों का तो आपको पता है, पैसे इतना हैवी चार्ज होता है ना, ह्यूज अमाउंट आपको देना पड़ता है इसके लिए। और है फैसिलिटीज VIP, हम लोगों ने सारा दिखा दिया, कहते देखो फुल फर्निश्ड है और साथ वो कहते हैं स्पा चाहिए आपको, साथ डाइनिंग में किचन दिखा दिया, साफ सुथरा है, इतना अच्छा नीट एंड क्लीन सारा एटमोसफियर। और है भी सारे फॉरनर्स के लिए, इतना ज़्यादा पे वहाँ के लोग ही करेंगे ना। और फिर ये 24 घंटे के लिए कहते हैं कूल, वे बहुत खुश हो रहे, कहते हैं साफ सुथरा इतना प्यारा। हालांकि खुद किन जगहों से आए होते हैं, इनके लिए तो चीज़ें कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इनके लेवल पे बनाई गई है यहाँ पे इंडिया में ना ये अपनी ट्रेन। तो जो भी ये गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स, इस तरह की जितनी ट्रेन है ना, अमाउंट आपसे चार्ज बहुत करती है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ देती है, खाना VIP जोन सा भी आपको चाहिए। और उनकी पूरा का पूरा आपको जिस तरह वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो तो VIP वाली सर्विसेज होती है। और इस तरह जो अपना फिर सारा कैबिन वगैरह दिखा दिया, पूरा वो ट्रेन का दिखा दिया, सारे एंजॉय कर रहे, सारे फॉरनर्स बैठे हुए हैं, कितना मज़े का सारा एक गैदरिंग हो रही है और अच्छा लग रहा था। खाना पीना भी मज़ेदार होता है, सैर होगी, स्टेशन दिखा दिए इन्होंने और अच्छा एंजॉय कर रहे थे। इस तरह के फॉरनर्स बड़े आते हैं और इंडिया में यही ट्रेन आए थे। तो इसमें ना सारे स्टेशन जो सारी सिटीज़ डिफरेंट स्टेट्स में सब होते हुए ना, हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है, नहीं इस लेवल की बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ पे। ये तो इंडिया में है, इंडिया का ज़बरदस्त है और ये लोग इंजॉय करते हैं इंडिया में आके, खासतौर पर रेल का सफ़र बहुत खुश होते हैं। बहुत जगह है, पूरा राजस्थान ही कवर कर ले तो बड़ी बात है। वो इतना खूबसूरत पैलेसेस और सब कुछ है, तो उन्होंने सब ट्रेन दिखाई है ना, जहाँ जहाँ ये रुकती है और सैरें इनको कराती है ना, वो जगह अपने आप में ऐसी ज़बरदस्त है। लोग आए देखने के लिए कुछ है नहीं, हमारे तो बस थोड़ा फैसिलिटीज भी नहीं है हमारे, तो ऐसे कुछ जो है भी है तो फैसिलिटी देना। जबरदस्त जी लग्जरी ट्रेन राइड हो गई है और इंडिया वाले तो समझते हैं ना अपनी ब्यूटी को, और उससे फैसिलिटीज देते हैं लोगों को, टूरिस्ट को ना जरा वहाँ से बुलाते हैं, या वो भी हमारे मुल्क पे देखो कि क्या कुछ है, ट्रेन जैसी ज़बरदस्त लग्जरी। और इनकी इन्वेस्ट मतलब होता है ना, बाहर से आएंगे तो आपकी फ़ायदा होता है ना आपके मुल्क के लिए, उसकी डेवलपमेंट में भी टूरिस्ट आते हैं तो उस पर असर होता है। वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ज़बरदस्त थी, बड़ा मज़े का सफ़र था भाई का, अच्छा लगा। इसी तरह और कोई वीडियो लेके आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर मिलते हैं आपसे।